Okay, hey guys, welcome back to our stream. So we have started our live stream right now. We are looking at gold. Okay, so this is a 1 minute chart, and you know that yesterday market has crashed huge. Okay, so that was some 30-minute candle. You can check it out. It continuously fall, and that was our trade which we have given you in our live stream. We took this trade. Right now I have taken a buy trade. You might ask me what is the reason behind taking a buy. Just to show you, if you just go to the 5 minute or 1 minute, you will find out there was a trail line here. Okay, there is a trail line here in 5 minute, and in 1 minute if you just check it out, there is a same trail line, and you have a retrace with a order block. You can check it out. I have marked this area. So maximum I'll hold my trade up to here. I know that trail line break, market did a retrace, so I'll just hold up to this to check it out if we do a liquidity sweep or what. If you do a liquidity sweep and goes up, I will hold the trade, or I will cut the trade below this area. And you can check it out. Here is the order block here in 1 minute OB. Okay, 1 minute OB here, and trail line. So that is the reason I have entered from this. I got a profit, but I was holding this trade. Okay, I'm holding this trade from this area. I took the trade from this candle order block, and trail line. So until it break this trail line, I mean until it break this order block, I'll stay in a trade, and I'm gonna hold this trade. Okay, and let me know your point of view. What's your view regarding gold? And you can tell me. So okay, I'll just put a poll. What's your view on gold? Okay, what's your view on gold, guys? Okay, so let me know what's your view on gold. अभी के लिए ओके, ये स्वीप हो चुका है, तो मैं एक छोटा सा ट्राई करूंगा कि यहाँ से ट्राई बाई के लिए और एक बाई करने के लिए. Okay, so let's see. Okay, I have taken a risk, and let me know in comment, guys, how many of you have entered and what's your enter and exit. And better use your SL and TP. You know that market is giving us a high volatile market, and I'm gonna hold this trade and cut this below this area. Okay, and if you have entered, let me know in comment box. I have entered and running at 10 pips because I have entered from below. My entry is from 33.42. Now it's running at 35 point. Okay, again it came to my entry point. Move it up. If you do, it's okay. If not, I'll come out. Okay, okay. Going up.
কি বেকার মার্কেট বেরিয়ে গেল। এর নিচে এসে রাখলাম, হিট করে দিচ্ছি। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay, this trade line and order block didn't support us. We have to see next zone then, like 4 hours. Let's go to the 4 hours. 4 hours giving us a bullish momentum. Even though we don't know what's happening, then we what can do is then we have to wait for breakout. Until it's do breakout, we can't enter. Okay. So ये वाला breakout होने दो, उसके बाद we will enter in a buy again from 30 to 44, like 150 pips. We need a 140 pips of move, then only I will enter in a trade. 1 hour after 30 minutes. Okay. Okay, so many of your view is buy side, but my same view is in a buy side. But the thing is, you can check it out. We have to wait for this breakout. Until it do a breakout, we can enter in a buy. Okay. So many sellers are here. This is our supply where the market is moving down. We had a one chance to take a trade, and I took the trade, and I came out. You know that reason. We had a trail line here, and we had a order block, and I entered in a trade. But the thing is, it didn't over and it fall. Okay, so I came out from the market. Right now also there is this one more zone is from here, but I am not using it. Let it go upside. Okay, because we know that market can move it from anywhere. तो यहाँ से जाना चाहिए था, वो तो चला गया, but after cutting the trade market came to my entry point. चलो कोई ना, यहाँ तक मेरे को देखना पड़ेगा, इसको ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद आई विल एंटर इन अ ट्रेड. ये वाला मैं तो अभी एंट्री नहीं करूँगा. 5 मिनट पे भी देख रहा हूँ. आप लोग का क्या व्यू है? यहाँ पर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना कोई फेयर वैली कैप, तो डायरेक्टली मैं रिट्रेस पे तो कोई एंट्री नहीं कर सकता, राइट? यहाँ पर कोई रिट्रेस जोन भी नहीं है. तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो ये लो है अभी के लिए, ये रीजन हाई है, तो मैं फीवो रिट्रेस देख सकता हूँ, ठीक है? सो यहाँ से यहाँ मैं फीवो रिट्रेस ड्रा करके देख सकता हूँ. ये है मेरा 0.5 का जोन. तो 26 मतलब 27 पर आप लोग एंट्री कर सकते हो एक बाई, ठीक है? ये वाला लिक्विडिटी स्विप पर 27 पर तुम बाई कर सकते हो, एंड 50 पिप्स का एएसएल 22 पर आप बाहर आ सकते हो ये वाला जोन से, ड्यू टू दी फिबोनाची रिट्रेस. एक्सेप्ट दैट अभी के लिए तो भाई कोई जोन नहीं है मेरे पास, ठीक है? मैं भी ट्राई करूंगा कि यहाँ से एंट्री करने के लिए. फिबो रिट्रेस से लो है, एक हाई है, नहीं तो भाई अभी से कोई चाहते हो अभी एक छोटा सा रिस्क लेकर कोई एंट्री ले सकते हो. मान लो 0.01 पे ले लो, जब मार्केट यहाँ पर टैप करेगा तब 0.02 पे ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पर ही मिल रहा है हम लोग का फीवो रिट्रेस. एक्सेप्ट दैट वी डोंट हैव एनी अदर जोन. सो फीवो जोन, तो मार्केट को ऐसे करके यहाँ तक आने दो, उसके बाद ये बाई, ठीक है? Like our target will be from here. This will be my target.
इससे पहले चला जाए तो भाई वी कैन डू एनीथिंग, राइट? चेक इट आउट। ये है मेरा लोअर लो, ये मेरा रीसेंट हायर में। अभी क्या रीसेंट हायर हाई ये है, ठीक है, रीसेंट हायर हाई। व्हाट्स व्यू ब्रो, लेट मी नो, ठीक है? आप लोग का क्या व्यू है मेरे को बताना। अभी के लिए तो भाई कोई मेरा व्यू नहीं है until it tap the FIBO retrace zone, except that we can see here we had a trail line but it didn't work. Now the thing is just to check it out कि यहाँ पर टैप होता है कि नहीं। यहाँ पर टैप होता जाता है तो हम लोग एक बाई करेंगे एंड इस ट्रेड को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? अभी एंट्री करो तो मेनली आपको 100 पिप्स हो जाएगा, ठीक है? इसे रखना पड़ेगा, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप चाहते हो तो अभी के लिए लो रिस्क पे एंट्री कर लो एंड आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? इफ वी डोंट गेट अ ट्रेड इन गोल्ड वी हैव टू चेक इन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन पे ये मेरा व्यू था, सिंपल सा व्यू आप देख सकते हो। दैट वॉज माई व्यू इन बिटकॉइन। मैंने बिटकॉइन पे क्या बोला कि भाई यहाँ पर रेंज हो रहा है, रेंज पे जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड पे ट्रेड करना। रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, इट डिड अ रिट्रेस, ये देख सकते हो यहाँ पर रिट्रेस किया था छोटा मोटा एंड इट गिवन अ शार्प फॉल। माय टारगेट वाज अप टू दिस लो, यू कैन चेक इट आउट। ये वाला लो मेरा टारगेट था, ये लो को स्वीप किया उसके बाद सीधा भाग गए ऊपर की तरफ, ठीक है? अभी के लिए रिसेंट पे यहाँ पर सेम थिंग्स 4 आवर्स में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 1 आवर पे देख रहा हूँ तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, बट वी हैव अ डिमांड जोन विच इज हियर एंड हियर, ऑलरेडी 2 टाइम यूटिलाइज हो चुका है। तो ये प्रॉपर डिमांड जोन पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। 30 मिनट पर भी कोई वैलिड नहीं है, जोन नहीं है, ठीक है? बिटकॉइन पे भी अभी तो कोई नो हिडन शोल्डर, नो नथिंग, ठीक है? 15 मिनट बिटकॉइन पे अभी कोई ट्रेड नहीं है, बट बाई करना है तो भाई नीचे से बाई करना है, ये जोन से बाई करो बिटकॉइन पे, यहाँ से बाई करना। सो एक चीज़ है कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि 5 मिनट पे यहाँ पर भी एक लो है। तो ऑलवेज आई यूज डिमांड जोन, तो डिमांड यहाँ पर पड़ी है तो इस डिमांड से मार्केट जा सकते ऊपर, ठीक है? बाइंग तो जाएगा बट देख लेना। यहाँ पर प्रॉपर इंगल्फिंग भी नहीं बनाया, बट देखते हैं।
आप लोग कौन सी ट्रेड लिए हो, बाय लिए हो या सेल लिए हो ट्रेड? ओके, आप लोग का कोई ट्रेड चल रहा था भाई मेरे को बताना, क्योंकि here I just mention you that gold is in a buy due to the Fibo retrace, and one more buy is from above this zone. We have a lower low, higher high, and Fibo retrace. And if it break this zone and do retrace, you can enter, and minimum you will get a, like if you target this low also, this low, you can just check it out from here to here also, you will get a 140 pips. Okay, so that will be our target, 100 pips target will be there. So if we break this higher high and do retrace, we will go for the buy. and यहाँ पर तो फिबो retrace तो already it did, जोन से आने से पहले ही थोड़ी बहुत मार्केट ने फिबो retrace कर चुका है।
How many of you have taken a buy trade? Let me know in comment box. कौन कौन बाय ट्रेड लिए हो एंड कौन कौन सेल ट्रेड पे हो, ठीक है, मेरे को बताना। क्योंकि मेरा तो एक व्यू था यहाँ से बाय का, वो तो ऑलरेडी चला गया, और एक व्यू है जब ये हायर हाई रीजन का, आई मीन लोअर हाई भी बोल सकते हो आप, ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद हम लोग को फिर से एक री एंट्री मिलेगा, ठीक है। ये तो मेरा व्यू है। लेट मी चेक बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी तक यहाँ तक आना चाहिए। यूरो यूएसडी रिटेस्ट किया था, you can check it out, this red candle it did a retrace and gone up to here, okay, then उसके बाद मार्केट में गिर गया, फिर से हम लोग का बाय का एंट्री मिलेगा यहाँ से यूरो यूएसडी। so if you want to take a trade from euro USD, go up buy from 1.15652, from that zone you can enter in a buy, ठीक है। I'm looking at this is our 4 hours candle, तो it will respect, okay, 4 hours candle पे तो respect होना चाहिए। तो मार्केट को अभी यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इम्बैलेंस कैंडल है, इसको फुलफिल करेगा, देन ऊपर जाएगा यहाँ तक। तो चेक इट आउट। यूरो यूएसडी पर आप लोग ले सकते हो ट्रेड जब मार्केट नीचे आएगा। यूएसडी, ओके, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी पर भी लेट मी सी। ओके, जीबीपी यूएसडी सेम ह्यूज फॉल। यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी बोथ आर वर्क सिमिलर, ठीक है, जैसे बिटकॉइन इथेरियम मोस्टली वर्क सिमिलर एंड इथेरियम एंड जीबीपी यूएसडी आल्सो वर्क सिमिलर। ये प्रॉपर वैल्यू तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते, बट ये अभी का रीजन लो है, ठीक है, रीजन लो पर आप लोग ले सकते हो एक बाय। तो मैं मार्किंग भी कर देती हूँ, यहाँ से बाय करना। लो के नीचे 1 मिनट और 5 मिनट के कैंडल क्लोज हो जाए तो आप लोग बाहर आ सकते हो ट्रेड से। टारगेट रखते हैं ना यहाँ तक 3-4:2, ओके। रीजन भी सिंपल है, यहाँ पर डिमांड जोन है, डिमांड होता है ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, यहाँ पर प्रॉपर चेंज ऑफ क्राइटेरिया भी हो चुका है। आफ्टर डूइंग दैट मार्केट नीड टू डू रिट्रेस टू गो अपसाइड, तो यहाँ से मार्केट जाना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप लोग मार्किंग जोन भी देख लो एंड मार्किंग करके रख दो। एंड यहाँ से मैं एक छोटा सा एक बाय लिमिट भी, बाय नहीं, जस्ट आई विल कीप एन अलर्ट, ओके। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई पे अभी तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है यूएसडी जेपीवाई पे, ठीक है, नो मोर ट्रेड इन यूएसडी जेपीवाई, कुछ भी नहीं है। 4 आवर्स पे तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, साइडवेज मार्केट है। और ये बोल सकता हूँ कि ये थोड़ी बहुत ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, जब तक ये डबल बॉटम क्लोज ना हो जाए। इफ डबल बॉटम ब्रेक, okay, if double bottom break then market will fall, okay, like here to retrace and fall up to here, or if it break this high, अरे 4 आवर्स पे देख सकते हो पूरा साइडवेज पे है मार्केट, तो सीधा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये वाला हाई तक टारगेट रहेगा। दिस इज आवर सप्लाई, ओके, सप्लाई तक मार्केट जाएगा एंड ये वाला डिमांड, ये वीक को कैच कर लो एंड इट विल गो, ठीक है। दिस इज आवर यूएसडी जेपीवाई। तो चला गया, इट मूव्ड अप, इट मूव्ड अप, ठीक है।
इथेरियम एंड बिटकॉइन आप देख सकते हो बहुत आर सिमिलर, जैसे मैंने बताया कि ये था लो इन 4 आवर्स, ठीक है। तो 5 मिनट का ये लो है, एंड मैं इसको 4 आवर्स पे चला जाता हूँ तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर इथेरियम का लो है, ठीक है। ऑलरेडी इसने स्वीप कर चुका है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि फिर से नीचे जाएगा, बट नीचे भी जाए तो यहाँ से तुम लोग बाय कर सकते हो फ्रॉम दिस जोन, टैप गो फॉर दी बाय, और इफ इट क्रॉस दिस डबल टॉप, लाइक इट्स नॉट डबल टॉप बट इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा यू कैन गो फॉर दी बाय। बीच में कोई ट्रेड मत करो, मार्केट को उसका जोन पे जाने दो, कम से कम ये वाला कैंडल तक तो तुमको मिलेगा, बट मैं टारगेट रखूंगा कि यहाँ तक मिल जाए, ठीक है। अभी देख सकते हो यहाँ पर डोजी की तरह फॉर्म हो रहा है, तो इसको जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड ही मार्केट जाएगा। मान लो कि इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया कैंडल तो ऊपर जाएगा, एंड इसके नीचे कैंडल और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो ये नीचे की तरह टारगेट आएगा यहाँ तक, ठीक है। ओके, जस्ट सी दी मैपिंग एंड यू कैन टेक ट्रेड। बोल तो मूव हो रहा है कौन सा,
Okay, as you can see that we have mentioned you that the market will go upside and which it can't. The reason was that simple. Only we had only one confirmation, which was a FIBO. Okay, market came to this order block also, like similar order block, and it tapped from order block and it can't. So we got only one or two confirmation we took, and it can't and hit our target. And how many pips it gone, if you just calculate from here to here, you can see the 200 pips market moved. Okay, so market given us a morning itself 200 pips. As I mentioned, like FIBO retrace is there, you can take a trade with a low risk. And one more thing, if you want to take a trade again, then I have to say that let it cross the zone. Like here also you see that this spike, you need to cross this spike and to retrace, then you can enter in a buy trade again. Okay, so right now there is nothing here. If you ask me should I enter in a sell, then you can enter and you have to keep your asset here, this area. But I'm not entering in sell. The reason is I can see the trade is bullish, market given us a 200 pips, and from 45 to 50, like 50 pips you can try taking a sell if you want to, but I'm not entering in this. Okay, सेल भी जा सकते हैं, यहाँ से सेल भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं एंट्री कर रहा हूँ. मैं सिर्फ इसको ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा हूँ. ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस करने दो. आई विल गो फॉर द बाय अगेन. My view is buy today because I can see the trend. By looking at the trend is bullish. So if trend is bullish, then we have to think for buy. That is the reason I'm not entering it. Okay, and tell me in comment box, okay, what do you think? দেখছিলাম বলে তাই আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম. ওকে, দেখছো মাত্র. হ্যালো, হ্যাঁ ফোন করেছিল তো বলে. কি ধ্যান আমরা 47.6 ছিল মার্কেট, না 46.
peak area. So if it break, you can enter again in a trade. Okay, this is the main supply, if you ask me. And supply break, then no more supply will be there. Look at this. This was my second trade. Okay. You can see that it break this previous high. Okay, this previous high and this supply, you can call that. And you can see that in single candle has given us a huge move. Get this 50 pips in a single candle, like 60 pips in, like 50 pips. Okay, single candle has given us a 50 pips, and you can check it out. Okay, look at this single, within a 2 minute it given us a 85 pips. Okay, 85 pips. Let's check it out. Told you that if it break this peak, then minimum you will get a 140 pips, which is 64 65 you will get. Okay, so if you enter now also you will get up to 70 pips. The thing is, then if you entering now, तो आपको लो रिस्क में एंट्री करना पड़ेगा एंड आपके ऐसे इस कैंडल के नीचे रखना पड़ेगा, रेड कैंडल नीचे, इफ यू एंटर नाउ. ठीक है, इस कैंडल के नीचे आपका ऐसे रखना चाहिए एंड you will make it a profit minimum 70 pips from here. क्योंकि ये वाला मैं पिक को मैं टारगेट करूँ तो ये वाला जो लो है इसका ही मिनिमम हम लोग को मिलेगा 70 पिप्स. ठीक है, ये और भी ऊपर जाएगा मार्केट. Check it out from here to here. Okay, 66 pips you will get. Okay, कौन कौन एंट्री कर चुके हो एंड कौन कौन एंट्री कर रहा है मेरे को बताना. Look at this one single candle. Okay, আসলে বাইরেই তো বসে থাকতো নাকি, শিফট হতে গেলে বাইরে দেখছি.
এটা এই পিকটা ব্রেক করেছিল, এই পিকটা ব্রেক করেছিল, মার্কেট রিটেস্ট করতে গেলে এই পিকে আসবে। আর এই জায়গাটা যদি দেখিস 1 মিনিটে, ওটাই একটা ট্রেল লাইনও আছে, প্লাস এত বড় ক্যান্ডেলটাকে রিটেস্ট করে যেতে বলে। আর এর নিচে সেটা এই এখন রিটেস্ট করিস না, একটু নিচে। প্রাইস জোন 20 পিপস চলে যাচ্ছে ধাপ ধাপ করে। Okay, so we almost got a 50 pips. Okay, 497 we got. As I mentioned, my target will be up to 4165. My plan was to take a trade from here, but I saw that market started to make a green candle from this zone. So in that candle itself, I took this trade, and let's see how much I can make it from this trade. ठीक है, इस ट्रेड से मेरे को कितना मिलता है देखते हैं। 50 pips तो आ गया था, otherwise I can take one more trade from 4151 से, ठीक है। 4151 से मैं फिर से री एंट्री करूंगा। I was a 45, 56.5 থেকে, let's see, 56.5. But I think taking a buy from this zone will be a perfect. Look at our buy mention zone, which is Fibo retrace. From that area, Fibo with the order block, market did a retrace. Okay, and again one more retrace is formed like here, this trail line, and our order block is here. So you can enter from this 51, or if you want to enter now, then you have to enter with a low risk, like very low risk, so that if it you can do the swing trade. ठीक है, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, इसी तरह एंट्री करना, डोंट टेक लाइक हाई रिस्क। यहाँ पर ही एंट्री कर लिया तो मतलब यहाँ तक तुमको ट्रेड को देखना पड़ेगा। इसके नीचे मेरा एसएल है 49 के नीचे, तो फ्री एंट्री आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो फ्रॉम हियर 51 पर आप लोग ले सकते हो, एंड 49 पर एसएल कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग्स, इफ यू टेक अ ट्रेड नाउ, आप ले सकते हो, बट थोड़ी लो रिस्क पे एंट्री करना अभी के लिए। ठीक है, इतना बड़ा इम्बैलेंस कैंडल था, उसका 80% रिकवर कर चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
You can check it out and you can see that our trade is running already 20 pips. Let's see. And already we made a 50 pips of profit in this zone. You can check it out from here to our trade. From here to here it gone. You can see the 50 pips. Be ready from this area. We will enter one more trade. Yeah, not only this, we will get much more like कम से कम तो भाई यहाँ तक तो जाएगा 300 pips का टारगेट रखूंगा मैं check it out guys, check it out. ठीक है 400 pips already, 400 I mean 40 pips already हो चुका था. मेरे तो Ahmed, hi brother, hi. How you doing? How are you and how you doing? So actually I have taken an entry from here, but if you want to take, you can enter in a low risk because my second zone will be from this area. Okay, this. I was planning to enter from this area, but you can see that market did a spike. So I don't want to miss this zone. For that I have entered one trade and I got 50 pips. Again you can see that 35 pips it's running. But if you get a zone from this area 51, you can enter. The reason, if you see here, here is the order block where market made a big candle and it need to do retrace up to here. Then only you'll get a good move. And already market is given us a 50 pips. Okay, it's okay, fine. But again, if I get a zone from like this area, I will enter. And if you see here, you will find out a trail line also. There is a trail line. Okay, so you can see that it touch 1, 2, okay, this zone. And market, if it come to the trail line also, you need to come up to like here it shows a 53, okay, but before it was in a 51 this area while I was planning to take a trade. So did you take any trade? Let me know. Okay, have you taken any trade? It's running, check it out, 50 pips. And my first target is here 4165. How many of you have taken trade and how many of you have made profit in it?
Okay, market again kindly came to my entry point. Still I'm in a 15 pips of profit. Yeah, and it's kindly, you can check it out where my entry is. There is a trail line, and my second entry will be, I'll cut the trade below this zone. Okay, checking out हम लोग को कितना पिप्स प्रॉफिट मिलता है एंड कितना लॉस होता है, देखते हैं ये वाला ट्रेड पे. I'll just check it out. Okay, you're still waiting for this signal. Yeah, brother, you just check it out. We were marking a zone here, right? 51. If it comes to 51, we will enter. And I enter because this zone is very big SL. So that is the reason we didn't mention in our Telegram. Check it out. It's nearly like 60 pips of SL. So that is the reason we usually mention that, but we'll mention soon. Okay, we will mention soon. Okay, from here we will try to enter in that in 15 minute also. In 15 minute we see here that is our 46. Okay, 51 to 46 will be the buying zone. Yeah, it will go buy from this area. This high peak. Okay, so let the market comes to okay, 51 we mentioned, right? Yes, it's in a 50. This high per market को retrace होने दो, then we will enter and we will mention in our Telegram when it comes to this area. Or if you think that you can want to enter now, you can also enter now, but enter with a low risk, because the thing is we will do the swing trade. Okay, हम swing trade करेंगे, so that is the reason you enter with a low risk here, and you can add one more layer in a 51 or 50. Okay, so you can take a trade, and this is our 15-minute candle where we see here the market need to come up to here. Already it's like now in a 20 pips of drawdown. Okay, 5 minute, nothing here. 1 minute is our order block. Okay, if you're planning to enter, you can enter now with a low risk. Okay, can I enter in 4151? Yes, brother, you can enter in a low risk. You can enter. The reason is here we have a order block, and one more reason, if you just see here in 15 minutes or 30 minutes, as I mentioned, this is our high peak. That means when our high break, market need to do retrace. So retrace zone is same in a 50 or 51. Yes, so this is our high where I mark. Okay, it came to the entry point 49. It came, so you can enter now. Even I'm also entering now. By nature. Okay, we have entered. Reason is there, order block is there, and the retrace area. This is our high, previous high. So market came to the previous high. Okay, so it tap. Now it need to go upside. Okay, I'm getting a 20 pips of profit. Here it's 15. Okay, 20 pips, 25. In 20 pips, if you think you can book some partial, one or two trade. If you have a multiple trade, try to book one. Again, if it comes down, you can enter one more trade. Okay, you can do that. তো এখানে 50.5 তুই কেন করছিস?
মনে করবো? আনরাবার অ্যাকাউন্টে খুলতে কেন করছিস? ঠিক আছে। Okay, like crazy, bro. Market is not even respecting our Vivo retrace, not even respecting the order block retrace zone. Okay, you can check it out, right? Without any reason, like we are getting a huge fall. Look at this, like 300 pips of fall within a few minutes. Okay, like last 5 minutes, if you just check it out, look at this. This happened within a 5 to not even 10 minutes. Look this. Within a 5 minute, we got a 5 to 6 7 minute. We got a 260 pips of fall. Damn, it's like unbelievable this. Nothing is respecting here if you see here.
it should respect this zone, even though like we had a high peak here, retrace area, we didn't get any retrace. What the hell? Gold is like very crazy, brother. Very crazy.
Just check it out. It's giving a like a 1 minute. The candle. If you just see here, 1 minute. If you just see here, 120 piece, bro. 120 piece a single candle. If it gives, how can we take trade and hold our trade? I'm still gonna. My view is still in a buy side. Reason I'm entering here is in a fair value cap, and my SL in a below this fair value cap. Okay. So I'm entering in a buy. You have to play in every zone. Let's see. Let's see what happens. Okay, hello bro. It's 1:2 trade. I cut the trade if it cross below this fair value cap, and if it cannot close. Okay, it's not closed yet. Let me modify my ESL. It's not hit. Still inside the fair value cap. Check it out. Check it out, guys. Just check it out. We took a trade from this FVG and it's running at 20 pips now. Okay, 25 pips. We can see that it's running at 25 pips. Now again came to the our entry point. Okay, 40 pips. Bro, we got 40 pips. Look at these 44 pips. Gold has been a little bit of crazy. Oh, यार इंटरव्यू मैंने से रहा था.
তিনটে কত কত গেল? সব 6 5 3 টোটাল কত গেল আজকে? 15 25 85 লস করতে পারছি না। চলে গেল 15। মানুষ কি করবে 30 পিপস থেকে 40 পিপসের উপর তো এসে রাখা যাবে না। আমাদের দিকে আয়, এটা তো হতে পারে। ये तो सही बात है। এটা যাচ্ছে আমাদের দিকে থেকে যাচ্ছে কিন্তু গেলে 20 থেকে 25 পিপস যাচ্ছে বাইরের দিকে। ফুললে তো পুরো ধুম করে পড়ছে 110 পিপস করে। আর আমি তো ভাবছি যে অ্যাটলিস্ট 100 পিপসে হোল্ড করবো। কি ফোন করছি না তো। বলতে হলো ভুল তেমন কি জানায়। এই কারণে সবারই ভুল হচ্ছে বলতে গেলে। সবাই আমরা নর্মাল যেমনি দেখি অ্যানালাইজ করি সেই অনুযায়ী আমরা ট্রেড নিচ্ছি, কিন্তু এগুলো দেখলে তো আমাদের অ্যানালিসিস অনুযায়ী তো আমাদের ট্রেড হচ্ছে। এমনিতে এমন নয় যে আমরা কোনো কিছু না জেনে বুঝে নিচ্ছি, নিচ্ছি আমরা ঠিকই নিচ্ছি। আর এই জায়গাটা শুধু আমরাই নিচ্ছি না যে আমরা অপোজিট নিচ্ছে, ওরা সবাই একদিকে নিচ্ছে, সবাই একদিকেই যাচ্ছে, লস হচ্ছে সবারই। তো এটা দেখতে হবে। Guys, just check it out. I have taken a buy trade from this AVG, market tap in this AVG, and we have taken a buy. Kindly, I'm in a like 25 pips it's running on, but it gone up to like 35 to 40 pips. We got that from here to here, which is 38 pips, right? So we usually got a 30 pips, 38 pips. We got this trade, and just checking out like okay. Yeah, 45 pips, 50, 50 pips we got. Okay. फिफ्टी पिप्स आ रहा था, फिर से मार्केट सेम जोन पे। क्या हो रहा है? I'm in negative. What the hell is wrong with market? अभी लग रहा है भाई फाड़ के जाएगा नीचे ले बोलकर। Crazy market, crazy market. We can't do anything. Look at this. 50
ठीक है ना। Okay, market is like doing a range now. ठीक है, प्रॉपरली रेंज हो रहा है. What do you think, guys? What do you think here? By looking at the market, I have taken a buy due to this fair value gap. Except that there is nothing here. I got already 50 pips and I'm still holding this trade. Let's see how much I can make, or will it my acid hit. I'll cut the trade after closing a 1 minute or a 5 minute of candle close. Okay. यहाँ पर तो भाई मार्केट पूरा 1 मिनट का कैंडल है एंड 1 मिनट पर देख सकते हो मार्केट व्हाट इज हैपनिंग हियर. इट्स डूइंग अ रेंज. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में पूरा रेंज हो रहा है. तो फिर भी हम लोग एंट्री किए हैं. अभी फिर से देख सकते हो 15 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है मेरा. ठीक है, एंड बार बार ब्रेक इवन तो हिट हो जा रहा है, तो इसलिए मैं ब्रेक इवन नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर गेटिंग 30 to 40 पिप्स मार्केट कमिंग टू रिट्रेस एंड हिट माई ब्रेक इवन. तो इसलिए मैं अभी ब्रेक इवन नहीं रखा हूँ. मैं चाहता हूँ कि एक बार देखता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाते हैं और हिट माई एसेट समथिंग. ओके, तो इसीलिए मैं कोई ब्रेक इवन नो कॉस्ट टू कॉस्ट. ओके, जस्ट चेकिंग आउट. एंड आप लोग बताना कौन कौन बाय. ओके, लेट मी नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू एंटर इन अ बाय ट्रेड और सेल ट्रेड. You can tell me. Okay, it's running now 25 pips again. So follow this trade and you can keep your SL below this fair value gap which I used, and I took this trade. I got a 40 to 50 pips. Then market is hitting our break even. That's the reason I haven't put. Okay, 30 pips running on. Congrats those who have taken this trade. 35 pips, we saw that, right? We saw that $350. Yeah, $342. Okay, so that means currently it's running again. Okay, again it came to the 20 pips. Who took this trade? Let me know. Who have taken this trade? How many of you have taken this trade? Let me know in comment box. Okay, you can check it out again. We got a 45 before $45, almost 450, and it's running up 40 pips now. $400, 40 pips. Let's go. Let's see what happens. Little bit of complicated market क्योंकि रेंज हो रहा है, तो रेंज पे जो जो लिए हो ट्रेड, आई वांट टू से कि आप थोड़ी बहुत बुक कर लो, पार्शियली बुक कर लेना. ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो हालत है साइडवेज पे जा रहा है मोस्ट मार्केट्स. तो आई वुड से
try to book some of your profit if you have taken. Okay, if you have taken, try to book some of your profit and hold some of your trade. Okay, again it's running at 35 pips. Now it's in a 30 pips. Okay, 40 pips. Okay, 45 pips. I saw now. It's a 45 pips it's running. Okay. Partially थोड़ी बहुत book कर लेना 45 pips. Look at this 50 pips. Okay. We got a 50 pips. Okay, 542. जो चाहते हो कि थोड़ी बहुत पार्शियल बुक करने के लिए आप चाहते हो आप बुक कर सकते हो थोड़ी बहुत पार्शियल. ठीक है. 50 पिप्स ऑलरेडी हो चुका है. 54 पिप्स तक हम लोग देखे हैं मार्केट पे. We got up to 54 pips. Okay. Let me know, guys. Let me know who have taken. Nobody has taken. Nobody. क्योंकि मार्केट पे थोड़ी बहुत crazy मार्केट है. It's not like volatile. It's like fall. Okay. तो चेकआउट करके आप लोग एंट्री करो. जैसे गोल्ड पे तो मेरा चल रहा है ट्रेड. मैंने यहाँ पर भी मार्किंग करके दिया. Okay. You coming or not? How many?
আগে দেখে নে, ঠিক আছে? Okay, market is very crazy, bro. Like it's given us a 50 pips, you can check it out. Now it's given us a 20 pips of downfall. Like no more like profit. It's not giving us any profit. Like it's doing a range. But if it comes to a zone, I will just come out and I will take a trade in US season. No more trade for today. Like no more trade for now. I will take a trade in US season. Very crazy market. I have entered and I got some like okay. Let's see. Let's see. I'll just cut the trade, okay? And I'll just put a SL in BTC. I'm not taking any trade, bro, because I'm gonna close my stream and I'm gonna see in US season, okay? So if you guys are watching, I would like to say, and my SL is here like 60 pips SL, not more than this. I'm not gonna keep more than this 60 pips of SL in BTC, except that there is no more trade, okay? Gold is my view is buy. गोल्ड पे मेरा व्यू बाई है, ठीक है? जब तक ये लो ब्रेकआउट ना हो जाए, ये वाला डिमांड जोन स्वीप हो जाए तो फिर से आप लोग एंट्री कर सकते हैं ये वाला जोन से. Except that there is no more trade, okay? You can check it out. Gold is going upside. You can stay in a buy until it breaks this fair value gap. If fair value gap break, and you can enter one more trade from 4130 or 31. Okay, you can enter and make profit in it. So that's it for now. I'm gonna close our stream. I'm gonna see you on US season. Thank you for watching, guys. See you guys. Tata.